anybody please tell me, am I audible or not in the chat section? Okay, thank you so much. Thank you, Rishabh. Thank you, Shruti, Tushar, Vishal. Thank you, Bihari. Thank you so much. So, before we begin the class, I would just like to introduce a bit about myself. So, my name is Karishma Ahuja, and I'll be conducting a small, brief introduction about the company called Inpanas Learning Solutions, and of course, the trainer that will be guiding you, or the person who will be training you. So I am, as you all know, the training being conducted through Inpanas Learning Solutions. Now, what is which is this company or where we came from? So Inpanas Learning Solution is a world-leading training, consulting, and staffing placement service provider across the globe. So we have all types of courses that you all are in need in terms of IT, in terms of cracking the interviews, in terms of preparing for the interviews or personality development or building your confidence. So all kinds of courses are offered by here, like by Infinite Learning Solutions. Now, if we talk about the faculties, so we do have the faculties with almost 17 plus years experience so that you can get the maximum benefit out of it. And as I said, we are world leading training institute. So we offer virtual trainings as well as offline trainings both. So as both the kinds of trainings are available at the same time, trainings are available from scratch and also for the career advancement. If no problem if the student is just a graduate or undergraduate or a working professional, on all kinds of courses are being provided. Okay, so I hope you all are clear what Inpanas learning is all about. Yes, are you providing job opportunities? Yes, we do provide job opportunities. We have regular courses also, and at the same time, professional courses also, where we provide 100% placement assistance. So I hope you all are good to go with what the company is all about. Please answers in the chat window if you are good to know about it. Okay, okay, great. So now let me just tell you a little bit about the course. So today we'll be starting with the live trainings for SQL. So this will be a 10 days workshop. So I hope you will be taking the maximum benefit out of it. And it is lovely having you all here. I hope for the next coming 10 days, we will be getting the maximum attendance as we are having for today. And now let me just come. And of course, the training classes will be for 1 hour procedure to join interview call. Okay, Vishal, I guess we can connect for this. You must be having our official number, or else you can just take it from the Google. You can just give me a call and definitely I'll let you know about the interview calls. Okay. So as we were talking about, we'll be having 10 days session for 1 hour, that is 5 to 6 o'clock. So I hope you all will be available on daily basis. So now let me just tell you a little bit about the trainer. So our trainer name is Mr. Chandra Sinha. He has almost 22 plus years of experience in EdTech sector. So I hope you will be taking the maximum benefit from his learnings and from his achievements. So over to you, Chandra sir, and everybody. Welcome you all to Infinite Learning Solution SQL batch, and thank you so much. Chandra sir, can you hear me? Yeah, you can. Yeah, sure. Just a minute. Let me share my screen first, and then I will become. Okay. So here we are. Just a minute. I'm just trying to share my screen. Uh, I hope everybody can see my screen now. Okay. So I will be talking about few things first. First thing is about what are the topics that we will be covering about, and a lot of things that we will be talking about. What is SQL, and what really means, what you need
when you the software you're needing to learn the SQL, what is really SQL is, where it is used, a lot of things are there. Okay, so if any have any query or anything that yeah, I will be answering that. Which SQL we learn from MS SQL. Okay, that is the part of it. That is the part of it. That is what we are in the beginning. I'm just going to tell you about. So what things that we are really going to learn about. What type of the say softwares we will be needing. Okay, just a minute. Just a minute. I'm just sharing one more screen apart from this theory. Uh, just just wait for 2 minutes. Yeah, so we are back. I hope that everybody can see my screen. Okay. There is one question, just a minute and chat. Okay. So which SQL, yeah, is my voice is coming right now? I'm audible because say, yeah, fine. So the terminology that we will talk about, the first thing is what is SQL. These are the lot of things that don't get confused. We are going to cover a lot of things, lot more than what is here. It is just a simple overview of what we are going to cover. We are going to cover a lot of things. Okay. So the first thing is what is SQL. If you want to understand SQL or learn SQL, then one thing I will tell you, because SQL is the basic requirement among all the software that you will be making. Whatever software you will be making, your background should have some database. Okay. Your background must have some database. From if you are creating a say application, or say just take an example of us, you are creating a student management system. Whatever language you are using, whatever modern language you are using, you will need to store data. Okay, so you need to store data where you will be keeping the data. So there are two type of data uh, files that you can keep, FSA file. One is thing is the file system. Just you, if you have any uh, prior programming knowledge, maybe you were using C or something, then you have to keep the data in file. Okay, there will be a lot of problem that I will be just discussing about, but you will have to keep the data. That is the point here. Which language you are using doesn't matter. You are using C or Java, Python, whatever. Even PHP, there are so many of the framework to use in Python, Django, Spring Boot. There are so many structure where we do the application programming, but you have to keep the data. So where you will be keeping the data, I repeat, either in file or either in database. But why you will be keeping database instead of file, or what are the minus point if keeping the data in file? Everything has some own advantage, yes, I would say, but the main problem is there. The database is much more advantages, have more features than the file, because file has a lot of disadvantages. So that is why you will be needing a DBMS or a DBMS. I'm coming to that thing. Okay, so a little bit of thing again, that if you are from a professional course like BCA, MCA, BTech in computer science, you must have been taught about a paper called DBMS, Database Management System. Has anyone has done this paper, has gone through this paper, DBMS, Database Management System? Yeah. So just in Onkar, lot of people are there. Okay, so they have learned, they must have learned about the why database management system is needed. What are the disadvantages of the file system? What happens with the file system?
So what happens with when you are using a file system? Suppose you are creating your application in uh, say C or C++ and keeping the data in the file. The file handling you must have heard if you learned a little bit of C even. So what will be the problem? Problem is that your data will not be independent of your program. Okay, your data will not be independent of your program. If you want to see the data, any operation you want to do on the data, you want to even see the data, you want to update is, and even any editing you want to do with data, you can't do separately. You have to go through that particular program. If you want to do any manipulation of data, and that manipulation is not there in your application. Okay, suppose you are doing a say inventory management system, it is created in C, and if you want to do some you want to see the data in a particular way which is not being presented by your software, you can't see it. You will have to write a module, update your program, only then you will be uh, able to see the data in that way. You want to do some say filtering of particular type. You want to see the some say some inventory which is going to be expire in 15 days. Suppose take an example, and your application, your present inventory management system application doesn't have that feature, that has have been not there in the application doesn't have the module for that. You can't do it. You have to create a function. That means you have to rewrite your program or update your program, and then you will be able to do it. Your file is not separate from your application. But take the example, when the application is created in any language, C, Java, anywhere, and the data is kept in say Oracle, or say in any other database management system. We will talking about various softwares apart from Oracle, MySQL. I will be talking about that. What those things are, what are their advantage and disadvantage. I will be taking the name of so many of them. Okay. So what will happen? Your data is separate from your application. Same data is there on many applications. Many program is simply using that data. So your data is behind, and your uh, just a minute, huh? Just so I use a lot of freewares. Huh? I just want to write something here, huh? Or even I can use paintbrush. Huh? Take the example here. Just a minute, I have to shift few things here and there. Hmm. Take example. Your data is kept in a database. Okay, this is the sign of database. It is created just like a drum. Huh? And what is the modern structure? This is your application server. Here is you have data, and there are program. Okay, various programs are there. People are connecting to the application server, and application is connected to the data. So your data is separate. People with special rights can directly access this data, can directly access this data. Yes, everyone doesn't have that much of the privilege or the rights, but they can directly work with the data. Suppose you want to filter the data that I was giving the example, that you just want to see all the data which are going to be all the inventory that are going to be expired in the next 15 days, within the next 15 days. So you will run a SQL command on your data, select asterisk from product, where you will have to write a query where the manufacturing date, and you have to do some little bit of a
say use of functions to minus the date from the current date, and you can get the list of all the product directly without going to your application. Your application data doesn't have that module, but you can directly work for that. So this is possible only when your data is separate from your program. With database, you can do it. But if it is file system is there, your application, your software that you have written in C or Java or anywhere, and the file is kept, say, uh, on your operating system in a particular data file, having any extension, is a is a binary file. You directly you even can't read it, let alone any updation or something. But here it is possible. If you like, oh, some special season has come, and we have to give 10% extra discount to every purchase, and it decision has been taken by your management, and this is not inbuilt in your software. And software doesn't have the facility to keep a text 10% discount for 3 days. There is no model for that. You can't do it. But if it is written in database manner, your software has a database layer separate and your application layer is separate, then what you can do, simply in your database application, write and trigger. Okay, we will talking about. Yeah. You have a question with the difference between MySQL and PostgreSQL. I'm coming to that. I will talking about a lot of software. Okay. I will talking about a lot of software, and I will give you a demo. I will use MySQL. I will use Oracle. I will SQL. Uh, okay. I will talk about the SQL Server. Just coming back. That's coming to you. But just uh, do asking the question, because I will know what I have to discuss. Okay. So keep on. Just thank you. Your question is just reminding me. Okay, fine. So what will happen here? This is the most important thing that I'm talking about. In that case, you will be writing a trigger directly here in your database, and uh, independent of your program that is written in Java or anywhere, you can directly manipulate the data. Okay, okay. Hindi and English, please. Okay. तो सिचुएशन यहाँ पर क्या है कि आपके एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, अचानक मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि राइवल वाला कुछ एप्लीकेशन अभी क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, मुझे भी देना चाहिए, हम लोग को भी 10% डिस्काउंट देना चाहिए, हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या होगा, जब बिल बनेगा ऑटोमेटिकली यहाँ से डिस्काउंट जो है 10% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा आपके एप्लीकेशन में आने के पहले ही, जो है यहाँ पर ही जो बिल का कैलकुलेशन हो रहा होगा उसमें क्या होगा, चेंजेस हो जाएंगे इंडिपेंडेंट ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, तो डेटाबेस के साथ यूज करने से क्या होता है, आपका डेटा, योर डेटा इज सेपरेट फ्रॉम योर एप्लीकेशन, वन ऑफ द एडवांटेज। ओके, देयर आर अदर एडवांटेज आल्सो। फाइल सिस्टम में क्या होता है, व्हेन यू क्रिएट अ फाइल सिस्टम, देन ऑल द yeah, yeah, I will talk about. So what will happen, I'm just taking the another example. All the facility, all the security, for example, all the security on your data is based on operating system. अगर आप फाइल में रख रहे हैं, अगर आप डेटा को फाइल में रख रहे हैं, तो फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो जितना भी सिक्योरिटी आपको मिलेगा वो आपका फाइल सिस्टम देगा। कौन कौन फाइल को रीड कर सकता है, फोन कौन फाइल को रीड नहीं कर सकता है, ये सारा फैसिलिटी कौन देगा, आपका एप्लीकेशन नहीं देगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। और हम ऐसा नहीं कर सकते, सपोज आई हैव अ डेटा इन एक्सेल, मैं फाइल बता रहा हूँ, फाइल का एग्जांपल दे रहा हूँ। सो आई हैव डेटा, I have a lot of data, but I just want to have a very simple data. I have data for this data are for the machine learning. Okay, so just see, I have some data here. Okay, sorry, this is not the data I want. I just want some other data. Say I want the data of, say, credit data, one day telecom data. I have so many data, just a minute.
there are some sales data here. Okay, I just want some user will not be able to see the price. कुछ यूजर को ये प्राइस दिखे, कुछ यूजर इस प्राइस को नहीं देख सके, कुछ यूजर इस प्राइस को चेंज कर सके और कुछ यूजर इस प्राइस को चेंज नहीं कर सके, कुछ यूजर सिर्फ ये तीन फोल्डर ये कॉलम्स देख सके, कुछ यूजर सिर्फ ये तीन कॉलम देख सके। ऐसा ऐसा फैसिलिटी फाइल सिस्टम में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल विद द फाइल। ठीक है, ऐसा कुछ भी करना है तो आपके एप्लीकेशन में जो अगर कुछ मिला होगा, ओनली देन यू कैन डू इट। ठीक है, लेकिन आपके एप्लीकेशन में नहीं है, स्टिल यू वांट टू इन्फोर्स समथिंग, यू कांट डू इट। सपोज वन सेल्स पर्सन इज ऑन लीव एंड यू वांट कि लीव में वो 3 दिन तक अपने एप्लीकेशन में लॉग इन नहीं कर पाए। ठीक है, you won't be able to do it, but it is the database is separate. I'm just coming here. You can freeze a particular user for 3 days, for 10 hours. You can do everything because you have the complete control on your data, which is separate from your program. Okay, I hope that because it is a very big topic here. आप डीबीएमएस के पेपर में पूरा एक सेमेस्टर डीबीएमएस पढ़ते हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ दोस थिंग्स, है ना। तो अचानक हमें 10 दिनों के लिए क्या करना है, किसी यूजर को ब्लॉक करके रखना है 10 days, जब तक वो छुट्टी पर है, ताकि वो डेटा में कोई चेंज नहीं कर पाए। वी कैन डू इट। ठीक है, सेल्स पर्सन है, एक सेल्स पर्सन दूसरे का कमीशन नहीं देख पाए। ठीक है, एवरीथिंग वी कैन डू इट डायरेक्टली एट द डेटाबेस। अगर इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay, so this is the advantage with the database that is not there in the file. And apart from file में क्या होती है, redundancy होती है। जिन्होंने RDBMS पेपर पढ़ा होगा, I hope काफी लोगों ने पढ़ा होगा कि वो talk about the anomaly, update anomaly, delete anomaly। ठीक है, suppose कोई user जो है वो yeah, non-IT no problem at all, non-IT suppose I just create a problem, मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। वी हैव से प्रोडक्ट्स, हमारे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का ढेर सारा डेटा है। पी नेम, जस्ट टू सेव द टाइम आई एम राइटिंग पी नेम, पी कैट फॉर द कैटेगरी। ठीक है, पी प्राइस फॉर द प्राइस, whatever you know, कि price, expiry date, and you have data about say customer, say C name, customer name, C address, C phone number, and we have data about salesperson, SP, say SP name, SP address, department, contact number. There will be a lot of things. Now see what is happening. Suppose I have a product called Pepsi, okay, and its P category is beverage. Beverage. Its P price is set 100 per packet. Expiry date is something, and the customer who has bought his customer name is say Raj, and his phone number is say 111. Is the salesperson who have sold it, who have brought the order, is called John, and its phone number is 666 or something. Okay, what happens? Suppose one more person is buying this particular product. Okay, another customer. Say I have another customer. Say Sunil. Okay, Sunil Gavaskar. His contact number is 222, and is a salesperson who has brought this just a minute. Who has brought this order is John. This particular person has brought the this order. अब हमें क्या करना पड़ेगा,
ये इंफॉर्मेशन हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, इसका फोन नंबर हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सेम थिंग, अगर इसने पेप्सी का ही ऑर्डर दिया तो क्या करना पड़ेगा, ये नाम पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमें ये इसकी कैटेगरी जो भी था, ब्रिवरेज जो था, ये हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड द रिडंडेंसी, ठीक है। एक्सपायरी डेट जो भी था वो भी हमें, अगर अलग हो तो अलग बात है, नहीं तो बाकी सर हो सकता है अलग ब्रैच का हो, तो ये अलग है, लेकिन लॉट ऑफ थिंग। सपोज अब एक और कस्टमर है, जस्ट अब क्या है कि सपोज एक और कस्टमर है, इन्हीं मिस्टर राज ने एक और प्रोडक्ट मान लेते हैं, एक और प्रोडक्ट है से कोका कोला। अब इसका भी मुझे सारा डिटेल, हाँ कोक लिख देता हूँ, इसका सारा मेरे पास डिटेल है, ये भी ब्रिवरेज कैटेगरी का है, या ब्रिवरेज हटा देता हूँ, कोई बिस्किट लगा देता हूँ भाई, पार्ले जी, हाँ शॉर्टकट नाम ले रहा हूँ, and it's a category of the snacks. Its lot price is 200 or 2000, whatever you like. Okay, and it has an expiry date of say 13. Now this product is being bought by the same Raj. I have to repeat. I hope that problem समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है. I have to repeat it. This is called the data redundancy, है ना. इसका फोन नंबर 111 I have to repeat. सेल्स पर्सन कोई दूसरे सेल्स पर्सन से, ठीक है, ठीक है, बट ये सेल्स पर्सन भी आई हैव टू रिपीट इट व्हेन ही ब्रिंग्स अनदर डेटा, okay, another record. What will happen now? See, uh, this redundancy will bring three type of problems. Suppose this customer Raj is my old customer. He brings, he give us order around 10 hour, say 2 order every month. So in year he is giving us 24 hour, and he is our customer for last 3 years. 12 and 24 into 3, 72 times his phone number is here. I have his phone number how many times? Because every time he give us order, I have to write his phone number. 72 times I have his phone number, isn't it? So it is a wastage of disk space, because even a 1 bit, when you have millions of record, it will create a problem, space. Apart from that, suppose this Raj says, my phone number has changed. You just change the phone number. तो लास्ट टाइम इसका फोन नंबर हमने कुछ और लिख दिया, से 999, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसका फोन नंबर चाहिए, मुझे क्या करना है, ये मिस्टर राज का मुझे फोन नंबर चाहिए. आई विल हैव हिज 2 फोन नंबर, 3 फोन नंबर. सो द सिचुएशन इज ट्रू बट नॉट फेयर, ठीक है. तो अपडेट का प्रॉब्लम है, हमें क्या करना पड़ेगा, 72 टाइम्स इसका फोन नंबर को अपडेट करना पड़ेगा. यू हैव द प्रॉब्लम, आई होप समझ रहे हैं. तो ये हो गया अपडेट की एनोमली. अब तो इंसर्ट की एनोमली आपने देखा कि जब ये पार्ले जी का प्रोडक्ट का फिर से ऑर्डर मिलेगा, आई हैव टू रिपीट दिस ऑल थिंग्स अगेन एंड अगेन. मैं खाली नहीं छोड़ सकता हूँ सामने, ठीक है. सपोज एक नया प्रोडक्ट आया मेरे पास, हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आया, मैजिक्स. I have a new product and it also belongs to the snacks, ठीक है. इसका 400 इसका प्राइस है, ठीक है. इसका कोई अभी कस्टमर नहीं है, सामने ब्लैंक नहीं रख सकते, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. सो ऐसा एंट्री हम कर ही नहीं सकते. सपोज a new user is registered but not has given any order. अब यहाँ से क्या करेंगे, it will have a problem. Understood? The problem of insertion, problem of updation. Now talk about the problem of deletion. अगर ये मिस्टर जॉन जो है हमारी कंपनी छोड़ देते हैं, हमने क्या किया कि जॉन के रिकॉर्ड को डिलीट करना है. ये जॉन के रिकॉर्ड जब डिलीट होगा तो क्या होगा कि उसने जितना ऑर्डर लाया वो डेटा भी साथ में डिलीट हो जाएगा. इफ यू डिलीट दिस रो. Understood? I hope everyone understood. Just put in the chat if everyone is understanding it. Problem समझ रहे? What will happen when you keep the thing in file system?
ठीक है, apart from security and those things. Okay, but what will happen? Somebody say, just repeat. Okay, so suppose this is a file system. Excel is file, is a flat file, है ना? तो फ्लैट फाइल में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास हमें रिकॉर्ड रखना है अपने बिजनेस का। यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे हमारे सेल्स पर्सन हैं। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ इच सेल। ठीक है, तो हमें क्या रखना है कि जब भी एक ऑर्डर आएगा तो हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड एंट्री करेंगे। किसका रिकॉर्ड एंट्री करेंगे, प्रोडक्ट का डिटेल डालेंगे, कस्टमर का डिटेल डालेंगे और उस सेल्स पर्सन का डिटेल डालेंगे जिन्होंने ये ऑर्डर लाया, क्योंकि उसका हमें कमीशन कैलकुलेट करना है, सैलरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इफ ऑर्डर फॉर द सेम प्रोडक्ट इज कमिंग अगेन, ऑब्वियसली हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं उसी में से तो ऑर्डर आएगा, तो हमें प्रोडक्ट का सारा डेटा हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब न केवल इसका रिकॉर्ड दोबारा लिखना पड़ेगा, कस्टमर भी तो हमारे बार बार ऑर्डर देते हैं, तो कोई किसी कस्टमर ने, एग्जिस्टिंग कस्टमर ने देखा तो उसका कस्टमर का भी रिकॉर्ड दोबारा लिखना पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा, ऑर्डर डेट अलग होगा, क्वांटिटी अलग होगा, है ना? ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑफ द डिटेल विल रिमेन सेम, उसका नाम, फोन नंबर, एड्रेस रिमेन सेम। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आई हैव टू इनपुट अ लॉट मोर रिकॉर्ड। जितना ज्यादा आप रिकॉर्ड डालेंगे, क्योंकि बिजनेस में what happens in the business, a lot of records are there, millions of records are there, so you will be wasting trillions of bytes, isn't it? आपको टेराबाइट में डेटा पर डे बर्बाद होगा, यूजलेस बर्बादी होगी। न केवल इससे क्या होगा, वेस्टेज होगा, इट विल क्रिएट अनदर प्रॉब्लम आल्सो। परफॉर्मेंस के अलावा क्या प्रॉब्लम होगी, इफ यू वांट टू अपडेट एनी पर्टिकुलर थिंग, सपोज आई रिपीट कि सपोज ये कस्टमर का फोन नंबर चेंज हो रहा है, आई हैव टू अपडेट चेंज दिस फोन नंबर 100 ऑफ टाइम्स, जहां जहां है, बिकॉज आई हैव सो मेनी टाइम्स। ठीक है, अगर इंसर्शन का प्रॉब्लम देखे, अपडेशन का प्रॉब्लम देखे, डिलीशन का प्रॉब्लम, आई रिपीट कि सपोज दिस मिस्टर हैरी इज लीविंग आवर कंपनी। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां से डिलीट करेंगे तो साथ में उसके सारे ऑर्डर जो आए थे वो रिकॉर्ड भी साथ में चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डिलीशन या डिलीट एनोमली। ठीक है, डिलीशन एनोमली। तो ये प्रॉब्लम होता है फाइल सिस्टम के साथ। डेटा बेस में क्या होता है, डेटाबेस में क्या होता है, आई जस्ट कम टू आरडीबीएमएस, आई जस्ट गो फॉर द जस्ट समरी में दिखाता हूं। वहां क्या होगा, you will keeping this customer information separately in a customer table, you will keeping the product information in a separate table. I will be coming further this primary key and everything. Okay, and order information I will be keeping in a separate table. Okay, so whenever, if you understand this, you will understand RDBMS. Your whole semester will be here in 5 minutes. Okay, yeah, if you understand, Rishabh, that is our प्राइमरी फोकस, कि आपको क्वेरी लिखना समझ में आना चाहिए, है ना? अगर आप आरडी में समझ जाएंगे तो क्वेरी जो है चुटकियों में लिखाएगी। मैं देखिए, मैं इसका क्वेरी जो आप बोलोगे, मैं यहाँ पर ओरली क्वेरी बना दूंगा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल बी एबल टू क्रिएट द क्वेरी ओरली, बिल्कुल। ठीक है, if you understand the RDBMS, then query will be damn easy. Okay, it is for the everyone. RDBMS को समझ गए तो क्वेरी बहुत आसान हो जाएगी, एसक्यूएल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। ओके, if you understand the RDBMS, you will understand SQL, you will understand how to write the query. Okay, so this is the essence of RDBMS. Okay, एग्जाम्पल, you see, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कस्टमर का अलग टेबल बना रहे हैं, और जिन्होंने आरडीबीएमएस पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा कॉर्ड्स के रूल के बारे में। सो बिफोर कमिंग टू दैट, मैं अभी क्वेरी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आई विल रन द क्वेरी, है ना?
उसके पहले मैं क्या करूंगा कि जरा सा आरडीबीएमएस को समझ लें कि व्हाट आरडीबीएमएस इज। पहले ये बात क्लीन हो गई ना कि डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ती है एंड वेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वेयर दिस एसक्यूएल स्टैंड्स, है ना। सो लेट मी गो लिटिल बिट ऑफ से इन अ फॉर्मल वे। तो डीबीएमएस के टास्क क्या होते हैं? स्टोरेज ऑफ डेटा, रिट्रीवल ऑफ डेटा, इंसर्शन ऑफ डेटा, अपडेट, डिलीट, ये बेसिक फंक्शन हो गए। इसके अलावा और क्या चाहिए? आई विल कमिंग टू द क्वेरी, है ना। वो जो लास्ट जो मैंने स्लाइड देखा उस पर आता हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें और समझनी जरूरी है, दैट आई विल बी कमिंग टू दैट, है ना। एंड टुडे इटसेल्फ, डोंट वरी अबाउट दैट, यू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स फर्स्ट। Data integrity means there should not be any wrong entry. Authorization, authentication, that I will be telling you first. Authorization means, suppose take the example of your library in your college. Everyone in the college have the library card. They have the library membership. Not only you, all the students, but all the faculty member are also library members. Apart from, there are people who are actually the who works in the library. Suppose you're librarian. They all have authenticated user. They all have the right to go to the library and get book issued. They all are authentic user. Sure, they all are authentic user. Students are also faculty are also authentic user, and even librarian is also authentic user. But do you have the same right that you have uh, your librarian? Your librarian can issue book. Can you issue book? No, isn't it? So this is called the authorization. The authority to do something is different for a student and different for the librarian. Despite that, student and librarian both are authenticated user of this college library. Understood the difference between authorization and authentication? I hope. So password is just authentication. It is not authorization. Okay, fine. I hope everyone is getting it. Huh? Oh, again, I'm giving the same example. Your librarian have different rights, and the student who is also a member of library have different rights. It means they have different authorization. Librarian can issue book. Librarian can discard any book. Librarian can set any book non-issuable, or can set that it will be issued to this type of people only. So this authority lies with the librarian. But despite being the authenticated user, the student can't do it. They can only take the book and return the book. They don't have such authority. I hope understood the difference between authorization and authentication. Okay. Data independence that I was talking about in the beginning. Your data is different from your application, and this is a very uh, detailed thing. I will not go into these things right now, because this boot camp will become the college RDBMS. Huh? Okay. So security, that's I was talking about. Password is not just a security. Security का मतलब सिर्फ password नहीं होता. Security is much more different thing than just simply password. ठीक है, कोई डेटा को निकाल के नहीं ले जाए, ये भी होता है सिक्योरिटी, है ना। तो दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि सिक्योरिटी का मामला क्या है। तो ये जो पूरा आरडीबीएमएस है, डीबीएमएस, अब डीबीएमएस के आगे देखें कि बिफोर मूविंग ऑन, जस्ट थिंक ऑफ द पॉपुलर आरडीबीएमएस टूल समबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि व्हाट आर द some of the popular RDBMS tools are there. Oracle is the, I will say, the market leader. It has the Oracle database is the most powerful database. सबसे ज़्यादा feature rich कोई भी database है तो वो Oracle है, ठीक है। It was among the first to create RDBMS. 1970s में जिन्होंने RDBMS पढ़ा होगा जानते हैं CORD के 12 रूल्स हैं। तो CORD का रूल का कम से कम 12 रूल में एक्चुअली में 13 रूल है, जो 6 को फॉलो करता है वो आरडीबीएमएस कहलाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा फॉलो अगर कोई करता है तो ये ऑरेकल करता है।
Oracle has the most feature rich RDBMS. एक्चुअली ये RDBMS से भी ज्यादा है, ये ORDBMS है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस है। यहाँ पर आप टाइप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है RDBMS प्रोडक्ट, वो कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट ये माइस्क्वेल है। माइस्क्वेल एक्चुअली में स्वीडन की कंपनी या पीपल ने उसको डेवलप किया था, माइस्क्वेल ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड लेटर ऑन इस माइस्क्वेल को ओरेकल ने बाई कर लिया, ठीक है। दैट इज व्हाई द माइस्क्वेल इज नाउ ओन्ड बाय ओरेकल, ठीक है। और जिस जिस पर्सन ने, जो मेन जो ऑथर था माइस्क्वेल का, उसने कहा कि नहीं मैं ओरेकल ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसने ओरेकल ज्वाइन नहीं किया और उसने एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, माफिया नहीं भी, मारिया, मारिया डीबी, ठीक है। Monty, yeah, somebody has given the name, and he has created another database called MariaDB, which is just the copy of MySQL, and it is still free, है ना। कुछ कुछ एप्लीकेशन के साथ अभी भी MariaDB मिलता है, और MariaDB के सारे कमांड एवरीथिंग इज 100% सेंड डाटा MySQL, ठीक है। और DB2 इट इज फ्रॉम IBM। IBM का जो RDBMS प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, DB2 है, ठीक है। PostgreSQL, it is becoming very very popular right now, ठीक है। PostgreSQL is very fast becoming the RDBMS of choice for many people, because PostgreSQL has most feature that even this because it is free. Number one, it is free community. Oracle is not free, it is very very expensive. Microsoft SQL belongs to Microsoft, is also very expensive. MySQL has two versions. MySQL has two versions, my community version and the paid version. Paid version is very expensive, but the community version is free. And we will be using the community version, and community version is has all the feature of the paid MySQL. Only some server tool are not there, and we are not concerned about. हमें सर्वर पर नहीं चलाना है, क्लस्टरिंग नहीं करना है, ढेर सारे ग्रिड नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाले बहुत सारे टूल हमें नहीं चाहिए, तो दैट इज वाई हम मास्कल के फ्री वाले वर्जन, दैट इज कम्युनिटी एडिशन को यूज करेंगे। इट डेटाबेस 100% सेम होता है, हमें सारा वर्क मिल जाएगा। MariaDB you can download, it is also free, सेम एज माया, इसका सारे फीचर सब कुछ MySQL जैसे होते हैं। DB2 IBM का है। PostgreSQL ये फ्री होता है, और फ्री कम्युनिटी एसक्यूएल में सबसे ज्यादा फीचर रिच कोई है तो PostgreSQL है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, MySQL होता है। सबसे ज्यादा फीचर रिच कौन है, Oracle है। फ्री में सबसे ज्यादा फीचर रिच कौन है, PostgreSQL है, ठीक है। नाउ और इधर मैंने कुछ नाम रखा हुआ है, MS एक्सेल, कैल्क। अगर आप लिनक्स यूज करते होंगे तो वहां पर वहाँ अपना फ्री ऑफिस होता है, वहां पर कैल्क नाम का सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये तो MS ऑफिस के साथ होता है, लेकिन इसमें सारा आरडीएमएस वाला फीचर दिखता है, लेकिन एक दो फीचर ऐसे हैं जो फंडामेंटल फीचर है उसमें नहीं होते हैं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को, इसमें मल्टीपल टेबल ज्वाइन सब कुछ होता है, बट स्टिल इसको आरडीबीएमएस नहीं बोला जाता है। MySQL एंड MariaDB और MySQL जो है ऑलमोस्ट उसके अंदर का चीज जो है ऑलमोस्ट सेम है, इट इज रिटेन बाय द सेम पीपल, लेकिन MySQL को Oracle ने क्या कर लिया, बाई कर लिया है, तो अब उसके नए रिलीज और चेंजेस जो करते हैं वो Oracle वाले करते हैं। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं कुछ फाइल्स वगैरह भी दूंगा, ठीक है। सो अब ये हो गया कॉर्ड के रूल और ईआर मॉडल, ये सब चीजें जो है ना, किसी ने कहा था कि भी मैं क्वेरी लिखने में वी आर वीक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस ईआर मॉडल, टेबल्स, रिलेशनशिप, ये समझ में आ जाएगा, तो क्वेरी विल बी वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेरी लिखना ना। तो उसके पहले क्या है, सर्टेन प्रीरिक्विजिट है, उसको समझना जरूरी है, ठीक है। उन चीजों को अगर आपने समझ लिया
तो क्वेरी डैम इजी हो जाएगी। मैं इंस्टॉलेशन वगैरह सब दिखाऊंगा एंड आई विल बी यूजिंग मोर देन वन, ठीक है, सिर्फ MySQL नहीं यूज करूंगा और भी RDBMS यूज करके दिखाऊंगा। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन रह जाता है कि व्हाई द नेम हैज एसक्यूएल 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 एवरीवेयर, है ना। देखिए यहाँ भी और एक्सेल का भी अपना एसक्यूएल होता है। सो व्हाट वेयर डज दिस एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, तो ये इस पर हम आते हैं। डीबीएमएस के टर्म्स है, वी आर लिटिल बिट, हमारा जो टाइमिंग जो है थोड़ा छोटा 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 है, तो इसमें से बहुत सारी चीजें मैं आगे भी कराते रहूंगा, है ना। सो ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आज मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, आई एम स्किपिंग फ्यू थिंग्स। तो ये सबसे पहले ये मैंने कहा था ये रूटीन एंटायर डिजाइन, तो क्या होता है, यूजर और डेटाबेस होता है, यूजर और डेटाबेस के बीच में क्या होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, जो मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा था कि यहाँ डेटाबेस है, यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर है, और यहाँ पर क्या है, यूजर है। ठीक है, तो अलग अलग यूजर, इवन यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है सेम डेटाबेस पर काम करता है। फॉर एग्जांपल आप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें, तो रेलवे का डेटा जो है एक पर्टिकुलर डेटाबेस में है पड़ा हुआ है, लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम वाला जो सॉफ्टवेयर है वो भी उसी डेटाबेस पर काम करता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर जो रेलवे के जो काम करते हैं वो भी इसी डेटाबेस पर काम करते हैं, लेकिन दोनों का एप्लीकेशन अलग होता है, दोनों अलग काम करते हैं, लेकिन डेटाबेस कॉमन होता है। ठीक है, लाइकवाइज किसी कंपनी में बात करो कि यहाँ पर एक HR डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और ये मान लें फाइनेंस डिपार्टमेंट है। HR डिपार्टमेंट वालों को यूजर का डेटा चाहिए, उसके सैलरी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए डेटा चाहिए, मार्केटिंग वालों को सेल्स से मतलब है, प्रोडक्ट से मतलब है, फाइनेंस वाले को सैलरी वगैरह से मतलब है। ठीक है, सबका डेटा कॉमन है, क्योंकि मार्केटिंग में किसी सेल्समैन ने सेल किया तो उसका जो सेल है उस पर ही तो क्या करेगा, फाइनेंस वाला उसका सैलरी कैलकुलेट करेगा। सो ऑल द, yes, it is called a structured query language, but real term is not SQL, it is SEQL, structured English query language. And why, what this language is all about, I am just coming to structured English query language, that is why sometimes इसको sequel भी बोलते हैं। फिल्म का sequel नहीं होता या नॉवेल का sequel नहीं होता, but sometimes it is called sequel। ठीक है, तो ये चीज समझ लें, अगर ये डेटा सेम रिपोजिटरी से नहीं आएगा तो क्या होगा, यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, है ना। नहीं तो क्या होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, किसी की सैलरी कैलकुलेट करके पे स्लिप इशू कर देगा जो रिटायर हो चुका होगा, है ना। ठीक है, ऐसा होता है ना, कभी सुना होगा आपने। सो डेटा इज कमिंग फ्रॉम द सेम रिपोजिटरी, सबका अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू सेम रिपोजिटरी से डेटा को एक्सेस करते हैं। ओके, सो डेटा इंडिपेंडेंस की बात नहीं करें, RDBMS के पहले हम जरा सा ये कॉर्ड के रूल को समझ ले, दो तीन रूल को। जिन्होंने पढ़ा होगा RDBMS तो उन्होंने बहुत सारा रूल्स पढ़ा होगा, सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट 2 or 3 रूल्स। ठीक है, yeah, somebody is asking the MySQL or SQL query is different or same, I'm just coming to, just think of this rule। कॉर्ड का रूल नंबर 0 कि डेटाबेस RDBMS में सारे रूल RDBMS वे में होने चाहिए। सुनने में बड़ा सा इट इट लुक्स वेरी एब्सर्ड, बट दिस इज द रूल कि डेटा एज वेल एज मेटा डेटा एवरीथिंग इज केप्ट इन टेबल। सो टेबल्स का इंफॉर्मेशन भी क्या होता है, दूसरे टेबल में रखा जाता है। यूजर कौन से, उनका क्या पासवर्ड, उनके राइट्स क्या है, दैट इज आल्सो केप्ट इन अ सेपरेट टेबल। कौन कौन सा टेबल है, किस टेबल का कौन से कॉलम्स का कौन सा डेटा टाइप है, किस पर किसको कितना क्या क्या राइट्स है, इट इज आल्सो केप्ट इन टेबल। सो the point is here, data and metadata, everything is kept in table, that is called the information rule 2 कि everything will be kept in table। ठीक है, दूसरा जो है इस पर ध्यान दीजिए, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गारंटेड एक्सेस रूल्स कि अगर आप टेबल का नाम जानते हैं, उसके कॉलम का नाम जानते हैं, उसके कीज, प्राइमरी की फॉरेन की को जानते हैं, तो आप सारा इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द गारंटेड एक्सेस रूल। और ये नल वगैरह पर आज मैं नहीं जाऊंगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। और तीसरा है दिस वन,
रूल नंबर 5, कंप्रेहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, ठीक है। इट सेज दैट देयर शुड बी अ लैंग्वेज, एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो आरडीबीएमएस का सारा काम कर सके। देयर शुड बी अ सेपरेट लैंग्वेज फॉर दैट, एंड एसक्यूएल इज दैट लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या है? एक ऐसा लैंग्वेज जो आरडीबीएमएस के लिए ही स्पेशली बना है, ठीक है। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग अबाउट द एसक्यूएल, दैट दिस एसक्यूएल इज अ 4th जनरेशन लैंग्वेज। क्या है? एसक्यूएल जो है एक 4GL लैंग्वेज है। I'm just deleting everything here. Huh? So what is SQL is? SQL is a, इसको बोला जाता है 4GL, 4th जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है, 4th GL लैंग्वेज। और इसको बोला जाता है कि ये क्या है? एक नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीड्यूरल है ना, नॉन प्रोसीड्यूरल। I have difficulty writing here, but just think, non-procedural। तो C जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजर, फंक्शन बनते हैं यहाँ पर। आप क्या करते हैं? वर्क करने के लिए फंक्शन बनाते हैं। आपके पास लूप होता है, आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, इफ एल्स होता है, ठीक है। इस तरह की चीजें एसक्यूएल में नहीं होती हैं। यू जस्ट राइट, instead of how to get the data, you simply write what you want. Select this from this, where this, something like that. Okay. So this is very important thing. What is SQL? SQL is a 4th generation language, which is a non-procedural language. Doesn't have loop, if else, function, creating function. ये सारी चीजें इसमें नहीं होती है। SQL is comparatively इजी है, ठीक है। इसमें इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, लेकिन आपको फंक्शन नहीं लिखना है। तो वैसा करने के लिए आपको एक प्रोसीजरल लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ओरेकल के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको एक और लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड द PL/SQL, ठीक है। तो just understand, not only SQL, just understand what is PL/SQL. It is procedural language for the SQL, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलेगा? ओरेकल में चलेगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक लैंग्वेज होता है जिसको बोलते हैं TSQL, ठीक है, ट्रांजैक्शन एसक्यूएल। इसमें फंक्शन बना सकते ही फेल्स होता है। लाइकवाइज अगर आप एक्सिस में काम कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है? दैट इज कॉल्ड द जेट एसक्यूएल, ठीक है। ये प्रोसीजरल पार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एसक्यूएल की, जो कि क्या है? जो कि नॉन प्रोसीजरल है। इज इट क्लियर व्हाट रियली the meaning of SQL? I hope you have understood what SQL is. Okay. PL/SQL and TSQL, these are the product of different company. Oracle का जो procedural है, जो सिर्फ Oracle पर काम करेगा, वो PL/SQL है। TSQL जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है आरडीबीएमएस का, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो कोड चलेगा वो TSQL होगा। TSQL थोड़ा थोड़ा देखने में विजुअल बेसिक जैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, और PL/SQL का स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा थोड़ा फोर्ट्रान जैसा होता है, ठीक है। जैसे असाइनमेंट लेते हैं PL/SQL में, तो असाइनमेंट ऐसे करते हैं, A = 5, तो कोलोन ऐसे करके लिखा जाता है ना। तो जो सिंटेक्स वगैरह जो होते हैं ना, दोनों का डिफरेंट होता है। न केवल सिंटेक्स डिफरेंट होता है, बाउंड टू मीन्स PL/SQL इज ओनली बाउंड टू ओरेकल, वो सिर्फ ओरेकल में ही चलेगा, दूसरे प्रोडक्ट पर नहीं चलेगा। TSQL सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पर चलेगा, कहीं और नहीं चलेगा, ठीक है। सो there are a lot of things to discuss, a lot of interesting thing. I find you are getting these things very very interesting, I hope. तो अब एसक्यूएल तक पहुंचने के लिए आई विल रिपीट कि आपको एसक्यूएल अच्छा से सीखना है, आपको क्वेरी लिखने में बहुत एक्सपर्ट बनना है, तो देयर आर सर्टेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। जब वो चीजें क्लियर होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेरी लिखना है, वेरी सिंपल हो जाएगा। और मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि आप क्वेरी लिखने में आप बिल्कुल आप समझे कि हाँ भाई क्वेरी मैं लिख लूंगा, हाँ, दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव। ऐसा हमारा क्या है, इस कोर्स का हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्वेरी लिखने में कोई डर ना लगे। जैसे बोलते हैं आई एम वेरी वेरी वीक इन राइटिंग क्वेरी, यू विल फाइंड राइटिंग ये बहुत मजेदार चीज है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव विथ विच दिस कोर्स इज बीइंग रन। ओके, सो जो फंडामेंटल मैंने अभी बताई, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट।
tomorrow Sunday, but there will be class and I will be talking about this things कि इसके पहले हमें एक और चीज समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं, जिन्होंने डीबीएमएस का पेपर पढ़ा होगा तो उन्होंने एक चीज सीखा होगा जिसको बोलते थे ईआर, हाँ, एंटिटी रिलेशनशिप, ईआर डायग्राम, है ना, ईआर मॉडल पढ़ा होगा। ठीक है, आई होप कुछ लोगों ने तो ईआर मॉडल पढ़ा ना, ईआर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर किसी को याद है कि ईआर मॉडल उन्होंने पढ़ा है? एनीवन? एनीवन? आई होप यस, देयर आर सो मेनी, यस, ओके। ठीक है, मैं ईआर मॉडल जो है कॉलेज में कई महीने तक पढ़ाई जाती है, मैं कुछ मिनट में बताऊंगा। okay, be sure about that. So people who have not done is, and people who are from the non-IT field, they will find it as interesting and they will be able to do the work on SQL as good as IT people. बिल्कुल we सभी कुछ ये सीख पाएंगे। ठीक है, so tomorrow we will be meeting and we will start installation and everything, and we will start writing queries tomorrow. Okay, ठीक है। At the end of the course, some study material will be provided. Okay, okay. We have SQL. You have, if you have SQL server or anything, no problem at all. ठीक है, मैं ऐसा कराऊंगा कि आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो कवर करेगा। एसक्यूएल कॉमन होता है, जो मैं अभी बात करूंगा नेक्स्ट डे। सम पीपल वर टॉकिंग कि एसक्यूएल सर्वर है तो चलेगा कि नहीं हमारी क्वेरी। आई विल शो यू हाउ टू रन द क्वेरी, है ना। ठीक है, ओके, वी विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो at the same time. I hope that everyone will be back and everyone will be finding this this course as interesting and full of something they will take home. Okay, yeah. So thank you everybody. We are just about to end this session.